Right. So another question was like the center of mass in absence of no external force, it does not shift. So accordingly, we can calculate. Then suppose ये कोई एक hemispherical groove है. This is a wedge having a hemispherical inner surface. Mass is capital M. A small block of mass M is released from one of the top end. Now all surfaces are perfectly smooth. So question is find the displacement of the wedge when block reaches the bottom. So ऐसे questions को करने का जो shortcut तरीका वही है. You have to find who is man and what is platform. Find the displacement of wedge when the block reaches the bottom. So in this case, like this block is the man and this wedge is the platform. There will be forces in y direction which is unbalanced. There is no net. Therefore, center will not. So your voice is सर आपकी breaking. वॉइस डिस्टॉर्ट कर रही है बहुत. X coordinate Yes, will sir, your remain voice is same. lagging. So अगर ये block right side में जा रहा है, Sir, your voice is lagging. oh, yeah, that's why I asked. Yeah, okay. Now I have changed the Wi-Fi. So now it should be better. Yes. This block of mass small m is released from one end of this hemispherical groove. On the hemispherical surface, as the block is coming down, we have to find the shift in the center of mass. So I said y direction, there is a force md which is not balanced by any other normal reaction. Therefore, it is y coordinate will be shifting. Center of mass will be shifting in y direction as the block is coming downwards, but x direction will remain same. X direction coordinate will remain same, means when the block is coming to the bottom, the x direction displacement in the block has been equal to the radius. The displacement of the block in x direction is equal to r, and as a result this platform will move in opposite direction. So जो platform के लिए formula था delta x is equal to mass of man into the displacement of man divided by m plus capital M. We will apply the same formula here. Displacement of this wedge is equal to mass of man into the displacement, which is r divided by m plus capital M. So straightforward, we can directly write without using any calculation also. If you remember that formula of man walking on platform, how much is the displacement of platform, this similar formula will work here also. Correct. So this is the displacement of platform or displacement of wedge. But in different type of question, it becomes slightly challenging. Like the question which was asked, it is a J question only. There is a cart on a perfectly smooth surface, mass is capital M, and a pendulum of mass small m is hanging through a string of length L. There is no external force. अभी question देखने में बस आपको relate करना पड़ेगा कि this is a similar concept. When this pendulum is displaced towards the left, towards the right, suppose by an angle theta, the cart will be shifting in opposite direction so that the center of mass coordinate will remain same. Right? This surface is perfectly smooth. There is no, I'm not writing the question, I'm just explaining through the figure. ना समझ में आया तो आप फिर से पूछ लेना. Man की जगह पे यहाँ पे क्या है? Pendulum. This pendulum of bob of mass m is displaced on one side. जब हम इसको right side में लेके जाएंगे, it is oscillating. The platform will be shifting towards the left
direction, the cart will be shifted in the left direction. M into L divided by small m plus capital M. कुछ ऐसा formula था. Small m is here, but how much is the displacement in x direction? So this is L. ये perpendicular length आ जाएगी L sin theta. So the displacement of cart when the pendulum reaches to the maximum position. Piyush, Yes, sir. बेटा ये समझ आ रहा है? हाँ सर. अच्छा, ठीक. मैं पूछ रहा ना, थोड़ा बोलते नहीं हो इसलिए. Right. So displacement of cart in opposite direction will be, and this displacement is with respect to Earth. Displacement of cart opposite to the direction of pendulum. When pendulum will go towards the left, the cart will go towards the right. So the motion of cart will also be kind of periodic motion, not exactly a SHM, in opposite to the direction of motion of pendulum. So this formula is very, very useful. Just you have to relate what is L here. In the actual formula जो हमने derive किया था, platform of mass capital M, man of mass small m. When it goes to the other end of the platform, how much is the displacement of the platform? Similar formula will work. You don't need to calculate. You don't need to do the derivation again and again. But you have to make sure that there is no external force in the system, right? Fine. Next question. Next example on the similar thing. On a wire. This question have been asked. I'm taking those examples only which have been asked in the exam. There is a ring of mass small m attached to a block of capital M. This is a capital M which is not fixed. The length of the string is L. Find the displacement of ring when this string become vertical. Find the displacement of ring when a string becomes vertical. Right. So again, इसमें x direction में tension T 0. Mg will be there. So in the y direction, center of mass will change, but in x direction, center of mass will not change. So जब ये block नीचे की तरफ आएगा, the ring will be shifted towards the opposite direction. Right? So ये ring तो नीचे आ रही है, ring नीचे कितनी आएगी? Displacement of the ring. Displacement of the ring in x direction is how much? With respect to ring, it is L. With respect to ring, it is L. But ring में opposite side में, तो यहाँ पर जो ये ring है, this ring is like platform. Situation समझ में आ रही है? इधर क्या है, ये block ऊपर string से touch नहीं कर रहा है. It has no connection with the string. वो बस horizontal पकड़ के रखा था. There is a block attached to the, जैसे pendulum होता था, but pendulum के एक end को हम fix करते थे, इस end को fix नहीं किया, इसको एक ring से attach किया, where ring is free to move. Ring is free to move on this wire. The ring is sliding without friction on this wire. Correct? So इसमें जो man है, that is this block, and the ring is like the platform. जैसे man L distance move करता था, similarly in this case, this platform is moving a distance of small l with respect to the, so we'll have to use this formula. Delta x is the displacement of ring. यहाँ पे कौन move कर रहा है? Block of mass capital M. The displacement of this block is L. Horizontal में आने पे ring के respect में इसने L distance, ये जब vertical हो जाएगा, so total displacement that it has covered in the direction is equal to the length of the string divided by capital M plus small m. बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं by using this approach, by using this. हाँ बेटा, सर ये ऊपर वाले में भी स्मॉल एल आएगा ना?
ये तो फॉर्मूला था बेटा, तो वो फॉर्मूला अच्छा प्लेट फॉर्मूला। फॉर्म, ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना हमने, दिस वन हाँ सर। प्लेट फॉर्म के लिए। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए बस उस फॉर्मूले को ही यूज करना है, केवल हमें कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल एम। कैपिटल एम कौन है यहाँ पे, मैन कौन है, प्लेटफॉर्म कौन है, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? यस सर। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बीच में आ भी जाता है, देयर इज सम पाथ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, if center of mass is moving, then also after the explosion, like in the case of bomb we did, so suppose this is the some bomb at the highest point of its path, it explodes, and it explodes into two pieces. A bomb of mass 2m is thrown with velocity u at an angle theta. At maximum height it explodes. At maximum height bomb explodes. थोड़ा और खतरनाक कर लेते हैं, bomb explodes into two pieces. The first mass retraces its path. Find where the second particle will land. Find where the second mass of the bomb will land on the ground. Two m का mass है, which was initially moving with certain. Now it explodes, और explode होके दो part में break हो गया. One mass is exactly reversed, so it follows the same path, और ये वहीं पे आ गया. Find where will the second mass will lie. तो उसका लॉजिक क्या है, अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता देन सेंटर ऑफ मास वुड हैव बीन मूविंग एट द सेम पोजीशन. सेम पोजीशन मींस इज इक्वल टू आर. सो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है आर. अभी जो दूसरा मास है वो कहाँ पे जाके गिरेगा, सो लेट्स से दैट इज इक्वल टू x2. हाँ बेटा, 3u square sin theta cos theta by g. राइट. अभी ये पहले वाला पार्टिकल जो आ गया दैट इज मास m. So after when it falls, the first particle is coming back of mass m exactly at the origin जहाँ से प्रोजेक्ट किया था. Second mass का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, x2 we have to find, and xcm हमें पता है, center of mass दोनों का होना है exactly equal to the range. So we can apply that formula. xcm is m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Center of mass motion does not change. The path of center of mass remains same even after explosion. xcm is equal to r. m1 x1 is 0, m2 x2 निकालना है divided by 2m. So it will become 2 times r. So that your answer is wrong. Sir, It is. Yes, boss. बोलो. मैंने तो मोमेंटम पहले कंजर्व कर लिया था ऊपर, क्योंकि 2m की वेलोसिटी u cos थीटा होगी, तो सेकेंड वाले मास की 3u cos थीटा आ जाएगी. उससे फिर मैंने प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा लिया. उसके अच्छा बाद सर, फाइनल कौन सा फॉर्मूला? मैंने रेंज वहां से बताई थी, बीच से. अच्छा, तो बीच से Origin हाँ, से नहीं बताई थी. आंसर फाइनली गलत है, मतलब आपको ना Origin से थोड़ा बताता आंसर हूँ. समझना है. बी केयरफुल. It is started from x equals to origin. The second particle should fall at that point so that center of mass will exactly
is the same point ओरिजिन से at मैंने निकाला तो मेरा आ रहा है 4u square sin theta cos theta by g. okay, right. नेक्स्ट पार्ट इज ये हो गया सेंटर ऑफ मास के मोशन वाले क्वेश्चन. इसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं बट वो अभी हम फिलहाल अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट इज द रोटेशनल मोशन. सो रोटेशनल मोशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. किसी भी पार्टिकल में या पॉइंट मास में कभी भी रोटेशन नहीं हो सकता बिकॉज पॉइंट मास का कोई साइज नहीं है और साइज नहीं है तो whatever force we apply cannot have rotational tendency. Translational motion when the force is applied in the particle. अब particle तो कुछ होता नहीं है, so किसी भी body में when the force is applied exactly on its center of mass, it's like the whole point where the whole mass is concentrated. It will be moving. It will be moving. If this is a perfectly smooth surface, it will be having a translational motion. और translational motion का कैसे हम condition define करते हैं? Translation motion is the motion in which each particle has the same velocity as the velocity of center of mass. Each particle has same velocity as the velocity of center of mass. Then that motion is said to be a translation motion. In the rotational motion, the condition is if a body is rotating, the rotation भी दो तरह का होगा. Rotation about fixed axis, rotation about free axis. Fixed axis, rotation about fixed axis, all the particles which lie on this body will always move on a circle with the same angular speed. So if each particle moves on a circular path with the same angular speed, it is called rotational motion. Each particle of the body moves on a circular path with same angular velocity as the angular speed of rotation. Circular path with same angular speed as the angular velocity of rotation. Correct? So if each particle, जैसे वहां पे हर एक particle की velocity same होनी चाहिए वैसे यहाँ पे हर एक particle की angular velocity same होनी चाहिए. So we define the identical quantities. V is equal to dx by dt होता है in the case of translational motion. Omega is the rate of change of angular displacement d theta by dt, where theta is the angle covered by the body in time t. This is theta. So angular velocity or angular rotational motion is the combination of many circular motion. When each particle move on a circle, then that combination is called a rotational motion, right? Right. अब ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी. सो जैसे हम रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन यूज करते थे, similarly for acceleration, linear acceleration or translational acceleration is dv by dt. The angular acceleration alpha is d omega by dt or d square theta by dt square. So we have angular acceleration. हम constant angular acceleration के लिए just like we write the equation of motion, similarly we can write the equation for rotational motion also, identical with the similar equations. Linear motion के लिए v is equal to u plus at. Similarly here omega is omega naught plus alpha t. But equations का valid होती हैं when the acceleration is constant. If it is not constant, then we have to do the integration for constant angular acceleration. Theta will be omega naught t plus half alpha t square. Third equation is omega square is omega naught square plus 2 times alpha theta. Fourth equation is displacement in the nth second is omega naught plus alpha by 2 times 2n minus 1. Right, so all these equation of motion we can use if the body has constant angular acceleration. Angular acceleration or angular acceleration हम कैसे calculate करते हैं? So now
when a body is in motion, translation motion, उसके motion को define कौन करता है? Mass and velocity. That's squared by momentum. Similarly, when a body is in rotational motion में the quantity of motion is represented by its angular momentum denoted by L. So every rotational quantity, जैसे every rotational quantity has a relation of, ये पार्टिकल है मास m का, ये v वेलोसिटी से जा रहा है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया हमने. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन? हर्ष, दिस पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन? Siddharth, this particle is moving in a straight line. Is it in rotational motion or translational motion? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? ट्रांसलेशन तो है सर, बता रहे ट्रांसलेशनल स्ट्रेट लाइन में तो ट्रांसलेशन तो है, पर मतलब रोटेशनल सर रोटेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन ही होगा. ये स्ट्रेट लाइन में सीधे चल रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज इट मूविंग और इज इट a translatory motion or it is ट्रांसलेटरी मोशन. translatory motion? Is there any rotational motion also? नो सर. Harsh, this No, sir. particle is a straight line. Is it translational or rotational motion? Sir, translational. Okay. किसी को लग रहा है इसमें रोटेशनल मोशन है? Anyone? Is a rotational Sir. motion too? पता नहीं, मतलब हाँ शायद पढ़ा था, पता नहीं. इतना पूछ रहे हैं तो कुछ तो होगा ही. Actually, we cannot say without knowing the point of observation. अगर हम इस particle को यहाँ से देखते हैं, this is point P, then only motion is pure translational motion. When you observe the same particle from point O, तो इसमें ट्रांसलेशनल भी हो रहा है और साथ साथ रोटेशनल भी हो रहा है, बिकॉज जितना भी इसने एंगल बनाया था पहले, that angle will be changing as the particle move. It will also, the angle will also be changing, theta 1 से theta 2 and theta 3 with respect to the reference point. So same particle or same point, it has the translational motion as well as rotational motion tendency with respect to point O. But with respect to point P, it is moving in a straight line. There is no angle. Angle is always zero only if you draw the line from point P to that particle. Right? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है. रेफरेंस फ्रेम तो चेंज नहीं किया हमने, हम अभी उसी फ्रेम में है, अर्थ में ही है. सो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू, ना थोड़ा बुक की जो डिफिनेशन है उससे थोड़ा हमें अलग समझना है. वी हैव टू फील व्हाई इट इज रोटेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? रोटेशनल मोशन मतलब इट शुड हैव एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब द लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट to the axis, the angle formed by that particle should change with time. Yes, sir. Correct? तो angle change हो रहा है ना अंशुल? यस सर. Yes, so that angle is changing with the time. That's why there is also angular velocity attached with it. Angular velocity and angular momentum, दो क्वांटिटीज हैं. एंगुलर वेलोसिटी से हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, जस्ट लाइक पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी से लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हैं. प्योर ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू पी, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, क्योंकि जो उसने एंगल बनाया है फ्रॉम पॉइंट ओ, दैट एंगल इज चेंजिंग विद टाइम as the particle moves. Translational as well as rotational motion with respect to point O. In this motion, now
To define its angular motion or to define its angular velocity of particle P with respect to O. Sorry, of particle P तो नहीं है, of particle with respect to point O. O या जिसको हम axis भी बोल सकते हैं. This is the axis of rotation. So now angular velocity किसकी वजह से आई थी? Because of circular path, right? और circular path में what is the relation between v and omega? अगर कोई particle v velocity v speed से circle पे move कर रहा है, उसकी radius Omega is है equal r. to V by R. Omega is equal to v by r, v is equal to r omega. So omega क्या होता था? V perpendicular. It has to be the perpendicular velocity divided by r. तो similarly जब हम यहाँ पर omega calculate करेंगे, तो हम इस v के वो वाला component लेंगे which is perpendicular to the direction, perpendicular to the r vector. I'll make another diagram. V cos theta हो गया along the plane and V sin theta is perpendicular to the radius vector, perpendicular to the r vector. So अगर हम इस particle को एक circle पे assume कर लें, then at that moment only the velocity due to which it is moving on a circle is not V, it is only V sin theta. Angular velocity is changing also from point to point, and it will be omega is V sin theta by r. Because the v sin theta component is the component which is perpendicular to the position vector, due to which this particle is moving on a circular path. Right? Yes, sir. Understood? Huh? Yes, sir. Particle की angular velocity change होती जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे r भी change हो रहा है, theta भी change हो रहा है. So angular velocity is not constant. Angular velocity constant होती थी in a uniform circular motion, but it has angular velocity, and that angular velocity will be calculated as v perpendicular by r. V perpendicular अगर ये angle theta है इस time पे, at any particular point when the angle formed is theta, particle is moving with velocity v and that position vector is r. Omega is equal to v sin theta by r. Because v sin theta is that perpendicular component of velocity due to which it is moving on a circle. Correct? आगे बढ़ते Yes, sir. हैं. In vector form, the relation in the general form, because in vector form v vector is omega cross r. It's a cross product of omega and r. That's the general formula. इसमें हमें theta यहीं से मिल जाएगा when we write this in vector. So v, omega and r, all three vectors are perpendicular to each other. Omega की direction किधर होती है, by the way? In which direction the omega vector x perpendicular to the plane or along the axis? जैसे यहाँ पर omega, this is rotating. Omega is always along the axis of rotation. जब ये clockwise rotate होगा तो right hand rule से clockwise turn करोगे हाथ को, thumb अंदर की तरफ आता है. So it is along the axis using right hand thumb rule. जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट वाले डायरेक्शंस होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिज्म में यूज की थी हमने, दे ऑल आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. राइट? फाइन. नेक्स्ट इज angular velocity. Similarly, when we have to define the quantity of motion of any body, it is represented as angular momentum. Angular momentum is moment of linear momentum. A particle of mass m moving with velocity v with respect to the position vector r. Angular momentum is moment of linear momentum. Angular momentum is moment of linear momentum, which is r cross p. Moment का मतलब होता है उसके position vector से multiply करना. So when we multiply with the position vector to the linear momentum, it converts to the angular momentum. Right? Okay. So r cross p, p is equal to mv, mv is at linear momentum.
Angular momentum is r cross mv or r cross p, right? अगर v और r के बीच में एंगल थीटा है at any time, then a cross b is ab sin theta. The angular momentum magnitude will become mvr sin theta. The magnitude of angular momentum will become mvr sin theta. mv into r sin theta. R sin theta will be this perpendicular length. R sin theta is that perpendicular. So हम angular momentum को लिखते हैं mv into r perpendicular. Mass into velocity into perpendicular distance. This is in magnitude only, but in vector form we have to write it is r cross mv. अगर किसी पार्टिकल में ट्रांसलेशनल मोशन है तो लीनियर मोमेंटम होगा, अगर रोटेशनल मोशन है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा. It will have both the type of motion simultaneously, translational as well as rotational motion. जैसे अभी इस पार्टिकल की जिसकी हम बात कर रहे थे, suppose with respect to the origin, it is at some coordinate a comma b, it's moving with velocity v. Question is find its angular momentum and find its angular velocity at the instant shown. Find the angular velocity and angular momentum of this particle. देखो ये चैप्टर वैसे लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल लगता है, जो मुश्किल वाला पार्ट है वो कभी पूछा नहीं जाता, स्पेशली मेंस में तो नहीं आता, वो एडवांस में थोड़ा बहुत आ जाता है, बट इट इज हाइपोथेटिकल दैट दिस चैप्टर रोटेशन सुनते ही घूम जाते हैं लोग. हाँ सर, मेरे साथ मेंस में हुआ था एक क्वेश्चन, काफी इजी था, पर मैंने उसमें रोटेशन का एक टर्म देख लिया और मैंने करा ही नहीं उसका. वही कह रहा हूँ ना, वो साइकोलॉजिकल है. दिस इज एक्चुअल में जो डिफिकल्ट वाले पोर्शन है वो उसमें 2-3 ही है, जो कि रोटेशन के ऊपर रोटेशन, जैसे एक डिस्क रोटेट हो रही है उसके ऊपर हमने कोन रोटेट कर दिया, तो वैसे वाले क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, वो भी बहुत कम ही आते हैं, मतलब 3 साल में एक बार के. सो इसको साइकोलॉजिकली दिमाग से निकाल दो, दैट इज दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट. एग्जाम में रोटेशन क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है, कुछ लोग कसम खा के जाते हैं बिल्कुल रोटेशन देखा तो बत्ती गुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड मोस्टली इट इज फॉर्मूला बेस्ड. तो लर्न ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर एंड 99% चांसेस ये हैं कि आप उसके क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे. अब अगर हम इस क्वेश्चन में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, तो दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट. क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट पोजीशन ऑफ एक्सिस इज नॉट गिवन. तो दिस क्वेश्चन इज नॉनसेंस. अगर इतना क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़ सकते हो, दिस विल बी bonus. Find the angular velocity and angular momentum of particle. बेटा मेरी आवाज आ रही? सो बीच Yes, में sir. कट गई थी. हाँ, वो थोड़ा पावर कट हो जाता है आजकल कुछ सेकंड्स के लिए, बट ओके. कनेक्टेड टू अनदर स्पॉट. ओरिजिन O और दूसरा है पॉइंट ये A, और पॉइंट A इज एट y इज इक्वल टू 2b. Point A, which is a distance of 2b from the origin, and then about point A. जब O से कैलकुलेट करेंगे, so this angle is theta, इधर आ जाएगा theta, this is r, और यहाँ पे perpendicular length is b and base length is a. Angular velocity कितना था? Angular velocity is p sin theta by r.
r कितना आ जाएगा, r will be root of a square plus b square, और दूसरा पॉइंट भी हमने कुछ ऐसे ही चूज किया that this length will also be equal to root a square plus b square. चाहे आप डिस्टेंस वाला फॉर्म लगा के देख लो या आप इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज कर सकते हो. When we calculate angular velocity about point O, omega is v sin theta by r. ये है v, और r को हम क्या लिख सकते हैं, from here r we can write as root a square plus b square and sin theta is perpendicular. ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so it will be b divided by root of a square plus b square. This is the magnitude wise, b divided by a square plus b square. What is the direction? क्योंकि ये clockwise rotate हो रहा है, ये x और ये y, तो thumb आएगा अंदर की तरफ. In vector form, this will be minus k cap. This is the angular velocity of the particle about point O. I am taking only those examples which have been asked in the exam, and if you remember the notes and understood the concept, it will be very easy. It will seem very easy. V sin theta upon r. V sin theta क्यों? क्योंकि perpendicular component चाहिए केवल. R is the distance between the 2 points. Next, जब हम इसका angular momentum calculate कर रहे हैं about point O, तो angular momentum का formula है mv into r perpendicular. Angular momentum about point O will be mass m, velocity v, perpendicular distance is b. Again, it is going in the clockwise direction, so it will be minus k cap. Correct? Angular momentum tha mv into r perpendicular, since it is going in clockwise direction, so it will be minus k cap. Now, when we calculate the same question about point A, A is here. A के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी निकालिए. This is r again. Magnitude wise, it will come out same. Why? Because ये theta, so here also it is theta only. Distance is r. और क्योंकि ये लेंथ थी b, this is a comma b, और total है 2b, so this will also become v. Omega about a will also come out same, b sin theta divided by r. But change क्या है? A के रेस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. So when your right hand thumb is rotated anti-clockwise, right hand palm thumb ऊपर की तरफ आएगा, so it will be positive. Value same ही आएगी, वो जानबूझ के ऐसे ली थी मैंने, VB divided by a square plus b square, and direction हो गया इसका plus k cap, क्योंकि a के about जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है इसका एंगल चेंज होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. The particle seems to be rotating in anti-clockwise. With respect to point A, its angular momentum is mv into b. Again, it will be plus k cap क्योंकि ये anti-clockwise होता है. Particle seems to be rotating in anti-clockwise direction about A, clockwise direction about O. But अगर हम angular momentum या angular velocity निकालेंगे about point B, it will be 0. Another concept जो इसमें आया objective में theoretical question. When a particle moves in a straight line, its angular momentum remains conserved. क्यों? Constant क्यों रहता है कि suppose ये particle है mass m और v velocity से चल रहा है और हम about O निकाल रहे हैं इसका angular momentum. Angular momentum होता है mv into r perpendicular. So इसकी जो perpendicular distance है, that is this distance. Even though this particle has changed its position on the same line, when you drop the perpendicular r, when you drop the perpendicular, this perpendicular length is still going to be same. Mass same है, velocity same है, because particle is going with a constant velocity. But in all the three positions, its r perpendicular is same.
right? So at these three position of R1, R2, R3, angular momentum is same. Angular momentum at A, angular momentum at B, angular momentum at C is same. So angular momentum remains constant when a particle moves in a straight line. In translational motion angular momentum होता है, yes होता है, but अगर हम किसी और point से observe करें तो और इसका angular momentum constant रहता है, it does not change with time. Correct. अब आते हैं angular momentum अगर हम किसी system के लिए करें, ये this is only for a particle, angular momentum का formula आ गया mv cross r, so उसको हम लिख सकते हैं mv into r perpendicular, and for a particle v is equal to r into omega. V perpendicular is r into omega, so that becomes mr perpendicular square times omega, क्योंकि velocity में और omega में relation होता है v is equal to r omega. R here is that perpendicular distance. Angular momentum is analogous to the linear momentum. Angular velocity is analogous to linear velocity. तो जैसे linear momentum होता है mass into velocity, similarly angular momentum को हम बोलते हैं I into omega, where I is the analogous of mass. जो काम linear motion में, translation motion में mass का होता है, the similar role is mass का क्या role होता है in the motion? It provides inertia. Greater mass, more will be the inertia. Difficult will be to generate or stop the motion in a body. Similarly, this I is the moment of inertia. Greater moment of inertia means it will be difficult to start or stop the motion. Right? So if a body has greater moment of inertia, it will be difficult to start the motion or it will be difficult to stop the motion. Likewise here, I is mr square for a particle. अगर एक particle है तो mr square, बहुत सारे particle हैं तो सबका moment of inertia हम add कर देंगे. m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. Moment of हाँ बड़ा थोड़ा पावर कट हो रहा है बार बार. Yes, moment of inertia for a particle is mr square. For a multiple particle, it will be mr square. It will be mr square. So अगर एक डिस्क ले लेते हैं और एक रिंग ले लेते हैं for the same mass and same radius. So डिस्क में mass distributed है center से लेके बाहर तक, और रिंग का, so if it has the same mass and same radius, disk will have the greater moment of inertia. Sorry, ring will have a greater moment of inertia than the disk. Correct. So moment of inertia for one particle mr square. For a multiple particle, it will be sigma of mr square for a collection of particle. And if there is a continuous mass system like a ring or disk or sphere, it will be integration of r square dm.
Moment of inertia for a particle I is equal to mr square. For a multiple particle system, sigma mr square. For a continuous mass like a ring. So continuous mass के जितने भी cases हैं वो हमें learn करने हैं. For continuous mass bodies like a ring or rod or a sphere. For one particle, for n particle system, सबका moment of inertia निकालेंगे. Again, moment of inertia should also be always be defined with respect to axis. Only moment of inertia has no meaning. It has to be always mentioned that about which axis we are finding the moment of inertia. So moment of inertia of all these standard cases like rod, uniform rod of mass m, length l. इसको हम derive नहीं करेंगे because time भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है. About the center of mass, moment of inertia of rod is ml square by 12. Moment of inertia of rod about one end. बट क्वेश्चन ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म. सो हम एक ऐसा एग्जांपल करेंगे. दिस वाज रिसेंटली आस्क्ड इन द जेई. सो सपोज इफ एनी रॉड हैज लीनियर मास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड तो फिर हम ऐसे डायरेक्टली उसके फॉर्मूले में ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 12 नहीं लिख सकते. इफ linear mass density of a rod is given as lambda is equal to kx, where x is distance from one end. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia about an axis passing through. About the axis passing through end of rod. Passing through end of the rod. If the total mass is capital M. से कुछ ऐसी रॉड है और हमें छोटे वाले एंड से from this end we have to find. Take r distance a small particle of mass dm, thickness dr. Moment of inertia of this particle is r square dm. dm को हम लिखते हैं lambda times dr, dx कर लेते हैं. The distance of x, it is of dx thickness, lambda dx. Lambda is k times x, so ये बन जाएगा kx cube dx. So when we integrate this on both the sides, integration should be from 0 to L, integration from 0 to I. I will become k times L to the power 4 by 4, but अभी हमें total mass calculate करना होगा. So total mass के लिए पहले dm integrate करेंगे. dm is lambda k dx, lambda is kx dx. अनन्या समझ आ रहा है ये? अनन्या? Yes, sir. You understood this question, last one? Yes, sir, I'm getting it. Okay, this question is asked actually recent year, so that's why I'm taking this. So NTA has started asking the more conceptual question. DM को integrate करेंगे तो M. DM को इंटीग्रेट करेंगे तो m आ जाएगा. राइट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2. लिमिट पुट करने पे ml स्क्वायर बाय 2. सो इसमें से हम kl स्क्वायर बाय 2 अलग कर लेते हैं. एंड दैट kl स्क्वायर बाय 2 I is equal to k स्क्वायर बाय 2 अलग कर लेते हैं. तो कितना बचेगा ये l स्क्वायर बाय 2. L square by 2. KL square by 2 is total mass, so ml square by 2. So now you can see that moment of inertia of the rod is not ml square by 3. It has changed because the mass has changed. Because the mass distribution has changed. Only for a uniform mass it is ml square by 3.
सर यस बेटा। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्क दे रखी होती तो भी हम उसमें आर स्क्वायर डीएम यूज करते कि कुछ और यूज करते? डीएम यूज करते हैं, बट डीएम को फिर सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर कर देगी, वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डीएम चेंज रहा था पर वो, यूनिट ठीक एरिया। है। हाँ ठीक है, वहां पर yes, डीएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली, इट विल बी सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर। अगर कोई स्फीयर होगा तो उसमें डीएम विल बिकम रो टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एंड ऑल द अदर स्टैंडर्ड केसेस लाइक ये तो हो गया रॉड के लिए। रिंग for a ring, a uniform ring of mass and radius r, axis passing through center, I is equal to mr square. Ring के ऊपर ring रखते जाओगे तो mass distribution remains same. Mass distribution remains same. It becomes a hollow cylinder. It becomes a hollow cylinder, and then moment of inertia will also be same. Mass distribution remains same, then moment of inertia formula will remain same. सबकी ring को add कर देंगे, so that become the total mass of that hollow cylinder about an axis passing through center. तो उसकी axis होती है moment of inertia is mr square. Similarly for a disk and this solid cylinder it will be same. For a disk and a solid cylinder. Disk के लिए center से पास वाला moment of inertia that is mr square by 2, and disk के ऊपर disk रखते जाएंगे तो बन जाएगी solid cylinder. Solid cylinder about an axis passing through center will be same. Hollow sphere and solid sphere. So these are the standard case जो हमें learn करने हैं. बाकी कुछ टेढ़े मेढ़े cases होते हैं जो कि हम integrate करके ही निकाल सकते हैं, but we don't not required. So अभी हम उसको नहीं करेंगे. जैसे कोन हो गया, कोन का एक वर्टेक्स के अबाउट. Hollow sphere I is equal to 2 by 3 mr square mass and radius r. Solid sphere 2/5 mr square. 2 by 5 mr square. अगर हम किसी मास को सिमेट्रिकली कट कर देते हैं, सिमेट्रिकली कट मींस द मास डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम. जैसे सॉलिड स्फीयर का हॉलो स्फीयर हो गया, दिस इज द सॉलिड स्फीयर. उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, इट विल रिमेन सेम, ओनली मास विल बिकम हाफ. इफ a mass is cut symmetrically, then mass distribution remains same, moment of inertia formula remains same. If a mass is symmetrically cut का मतलब उसका mass distribution same रहना चाहिए. Symmetrically cut, the moment of inertia remains same और formula remains same, मतलब mass change हो जाएगा, only mass will change accordingly. जैसे पूरी डिस्क का होता है mr square by 2. For a complete disk, it is mr square by 2. अगर ये half disk है about the same axis, it will also be mr square by 2. but difference क्या होगा, यहाँ पे जो m है वो इस आधी डिस्क का मास है. For the semicircular disk, small m will become capital M by 2. Right? So अगर हमने मास को symmetrically cut किया है, as long as the mass distribution is same, it will remain same only. Right? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज जैसे इसको हम कट कर दें सिमेट्रिकली, इट मेक अ पिज्जा स्लाइस. अ सेक्टर I will be again equal to mr square by 2, where small m will be capital M theta by 2 pi times capital M. This is also a sector of a disk, right? So ऐसे हर एक पार्ट के लिए अगर सिमेट्रिकली कट करते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. There are two theorems for moment of inertia. Theorems on moment of inertia. पहली थी parallel axis theorem और दूसरी perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem is
when for any body, this can be applied for 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, any type of body we can use. So 1 dimension like rod, 2 dimension like this, 3 dimension like a sphere. अगर हमें किसी भी बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस, moment of inertia about the parallel axis, I is equal to ICM plus M into A square, where A is the perpendicular distance between the two parallel axes. A is perpendicular distance between the axes. ठीक है. ओके, सो जैसे सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए उसके टेंजेंट के अबाउट, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर about its tangent we will apply I is equal to ICM plus M into A square. A here will be equal to radius, उसके सेंटर के अबाउट mr square by 2, A is equal to r, that become 3 by 2 mr square. दूसरी एक्सिस थी perpendicular axis theorem, which is applicable only for 2 dimension bodies. perpendicular axis theorem हम अप्लाई करते हैं केवल 2D में, जैसे डिस्क या शीट. perpendicular axis theorem for 2 dimension body, for not for 3 dimension bodies, for हम only for 2 dimension like sheet और lamina. So किसी भी शीट या लैमिना में अगर हम उसके प्लेन में लाई करने वाले 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ यू नो moment of inertia about x axis is Ix, moment of inertia about y axis is Iy, then moment of inertia about z axis, moment of inertia about the perpendicular axis Iz is equal to Ix plus Iy. Moment of inertia about the perpendicular axis is equal to sum of moment of inertia about the 2 axes lying in the plane of the paper. Right? So okay, we have done till moment of inertia calculation. तो आपको थोड़े examples देखने हैं. Chapter थोड़ा बड़ा है, it's taking time, but this chapter has always 2 to 3 questions in every exam, and 99.99% of the time that question is very easy. Very easy मतलब it is solvable. It's not like you have to leave moment of inertia or rotation question you have to leave. It's not necessarily true. So don't leave this chapter. At least the basic formulas we have to do. Okay, so we will continue tomorrow from here, and tomorrow we'll finish this chapter. Rolling motion बचा है और rotation motion की equation बची है, dynamics. So tomorrow we will be done with this chapter. Okay, चलो ठीक है. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.